Rahman Rahim. Sarfaraz Soomro, lecturer in Botany, Government Boys Degree College, Naudero. Today we are going to talk about the kingdom Botany. All living organisms are classified into 5 kingdoms: kingdom Prokaryotes, kingdom Protoctista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. Kingdom Plantae, in which plants are included. What are plants? Plants are the connecting link between organic and inorganic worlds. Plants are multicellular, plants are eukaryotic, plants are autotroph living organisms. They have the ability to produce their food. Plants are photosynthesizers. That's why plants are termed as producers. Plants are further categorized into 2 divisions. The plants which do have xylem and phloem are called higher plants, tracheophytes plants. The plants which do not have xylem and phloem are termed as lower plants or bryophytes plants. Bryophytes are the most plants, amphibious plants. They grow near shady places, moist places. While the tracheophytes are the terrestrial plants, they grow on the land. Tracheophytes plants are further divided into 2 categories: seed plants and seedless plants. Seedless plants are termed as pteridophytes, while the seed plants are termed as spermatophytes or spermatophyta. Spermatophyta are further divided into gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm plants are those plants which have naked seed, cone-shaped seed, while angiosperm are those plants which have covered seed. Angiosperm plants are further divided into monocot and dicot. The monocot have 1 cotyledon and the dicot have 2 cotyledon. And also there are some differences are also there in the structure of stem, in the structure of leaf, in the structure of xylem and phloem arrangement. Today the topic which we are going to discuss is the family, that is the dicot family. In dicot families, we are going to discuss here about the legume families. In legume families, we are going to discuss about the family Fabaceae. The old name for the Fabaceae family is the Papilionaceae, also called pea family. There are 9,000 species of Fabaceae family are distributed in all over the world with 400 genera. In Pakistan, there are 587 species of 82 genera are found in Pakistan. The characteristics of Fabaceae family, if we discuss the characteristics of Fabaceae family, it is easy to discuss about the floral formula. अगर आप किसी भी फैमिली के कैरेक्टर देखना चाहें, अगर डिटेल में कैरेक्टर देखेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप फ्लोरल फार्मूला को देखेंगे तो फ्लोरल फार्मूला में सब कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला में सब कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ ये जो सिंबल है देख रहे हैं आप, ये सिंबल है ज़ाइगोमॉर्फिक। Zygomorphic means the flower is cut in only one plane. If flower is cut in any plane, this is called actinomorphic. If the flower is cut in one plane, this is called zygomorphic. This symbol shows the gender. This symbol shows the sex of plant. If the plant is bisexual, we write like that, plus and arrow. This is bisexual. This is also called monoecious. One house, when male and female part of the flower is in one plant, that is called bisexual or the monoecious. This is calyx. Calyx, if the calyx contains 5, if in bracket this is called fused, if without bracket this is called free. K जो है वो इस्तेमाल होता है calyx के लिए। आपको पता है कि फ्लावर के
चार पार्ट्स होते हैं, एंड्रोशम, गायनोशम, कैलेक्स एंड करोला। एंड्रोशम एंड गायनोशम एक्सेसरी पार्ट होते हैं, एंड्रोशम एंड गायनोशम एसेंशियल पार्ट होते हैं, while जो कैलेक्स एंड करोला होते हैं वो एक्सेसरी पार्ट होते हैं। तो ये जो के है, ये के शो करता है कैलेक्स के लिए। कैलेक्स कितने हैं? कैलेक्स जो है वो है 5 और वो 5 फ्यूज है। करोला जो है वो एक फ्री है, 2 जो है लेटरल हैं और 2 जो है वो एंटीरियर है। एंड्रोशम है डायडेलेफस, मींस 9 जो है 9 एंथर जो है वो फ्यूज है। एक जो है इस तरह से, जो 9 है वो इस तरह से, 9 जो है वो फ्यूज है और एक जो है वो है फ्री है। इसको हम कहते हैं एंड्रोशम डायडेलेफस। गायनोशम जो ओवरी है वो सुपीरियर है, इसलिए हमने लाइन नीचे दी है, तो ये इसका होगा गायनोशम। ये सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, मोनोकार्प वाली, वन पिस्टल, सिंपल वन पिस्टल। सो फ्लोरल फार्मूला में जो ये फार्मूला दी हुई होती है, ये सारी फार्मूला प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। ये प्लांट एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, प्लांट मोनोसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, मोनोशस है, डायशस है, सेपल्स कितने हैं, उसमें करोला कितने, कैलेक्स है, उसके अलावा एंड्रोशम और गायनोशम, ये सारे जो है कैरेक्टर ये प्लांट की जो है ना फ्लोरल फार्मूला में ही आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ फैमिली की जो है फ्लोरल फार्मूला ही सारे प्लांट के कैरेक्टर्स को डिफाइन करती है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फेबेसी फैमिली के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फेबेसी फैमिली की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? अगर हम इकोनॉमिकल की तरह देखना चाहें तो फेबेसी फैमिली जो है ये सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन फूड, पल्सेस, दालें जो हैं वो सारी इस फैमिली में आ जाती हैं। उस दालों में जो है ना ग्राम है, मटर है, मसूर है, मूंग है, माश है, ये सारी जो है दालें ये all rich in high proteins, ये सारी दालें जो हैं ये आ जाती हैं फेबेसी फैमिली में। तो फेबेसी फैमिली इज आल्सो मेन जो है सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन फूड, फूड की तरह इस्तेमाल होता है। इसमें से ऑयल निकलता है। पीनट जो प्लांट है, एरेकस हाइपोजिया, ये जो प्लांट है पीनस, इसका जो सीड होता है उसमें से ऑयल निकलता है। फोरेज मोस्टली जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स है, हॉर्स है, गॉट है, काऊ है, बफेलो है, उसके लिए जो अल्फाफा, मेडिकागो सेटिवा, जिसे हम अल्फाफा भी कहते हैं, ये एक जो है ये क्रॉप है। ये जो डोमेस्टिक जो है ना एनिमल्स हैं उसके लिए चारा है, उसके लिए जो है ये फूड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद टिम्बर है, फर्नीचर है, जो हमें दिन भर की आशीष, ये एक प्लांट है जो है इससे हम रेडवुड भी कहते हैं, इसमें से हमें टिम्बर मिलता है। और मेडिसिनल वैल्यू भी है, फेबेसी की मेडिसिनल वैल्यू भी है। मेडिसिनल वैल्यू के पास से क्लाइटोरिया टर्मेटा है या माइकोराइजिया, ग्लाइकोराइजिया, यहाँ ये जो है ग्लाइकोराइजिया है, ग्लेब्रा है, ये कोल्ड और कफ के। और जो ऊपर जो प्लांट है क्लाइटोरिया टर्मेटा, ये स्नेक बाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के एतबार से भी वेरी रिच फैमिली है। इसमें सोर्स ऑफ फूड है, इसमें ऑयल की एक्सट्रैक्शन है, फॉरेज है, टिम्बर है, मेडिसिनल है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ज्वेलर्स जो होते हैं, जो रत्ती बनाते हैं, वो भी इन प्लांट से बनती है। सो फेबेसी फैमिली की कितने स्पीशीज हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज, उनके जो कैरेक्टर हैं वो हमने फ्लोरल फार्मूलास में भी से देख लिए और उसके इकोनॉमिकल पार्ट्स भी देख लिए। आई होप कि फेबेसी फैमिली के हवाले से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। थैंक्स।